మాజీ రాష్ట్రపతి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ద్వితీయ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన స్వస్థలం రామేశ్వరంలో 15 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన కలాం స్మారక కేంద్రాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. ఢిల్లీ నుంచి మదురై మీదుగా రామేశ్వరం చేరుకున్న ప్రధాని కలాం విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో ముచ్చటించారు. కలాం సమాధి వద్ద నివాళులర్పించారు. కలాం జీవిత విశేషాలు, ఆయన సందేశాలను దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసేందుకు రూపొందించిన కలాం సందేశ్ వాహిని బస్సును కూడా ప్రధాని ప్రారంభించారు. నీలి విప్లవం పథకం కింద స్థానిక మత్స్యకారులకు పడవల మంజూరు పత్రాలను అందజేయనున్న మోదీ అయోధ్య రామేశ్వరం మధ్య నడిచే నూతన ఎక్స్ప్రెస్ రైలును దృశ్య మాధ్యమం ద్వారా ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం హరిత రామేశ్వరం ప్రాజెక్టు వివరాలతో కూడిన పట్టికను ఆవిష్కరించనున్న ప్రధానమంత్రి చివరగా రామేశ్వరంలో ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. To touch the sacred soil of Rameshwaram as home to one of 12 Jyotirlinga of our country, Rameshwaram is not only a religious center. Rameshwaram is also a center of deep spiritual knowledge, a Gyan Punja. In the புண்ணிய ராமேஸ்வரத்தினுடைய புனித மண்ணினை தொடுவதிலே நான் அதை பெருமிதமாக கருதுகிறேன். இது ஒரு மதத்தினுடைய மையமாக மட்டும் இருக்கவில்லை, இது ஆன்மீக பூமியாக தொடர்ந்து வழிகாட்டி வந்திருக்கிறது. A place that was also visited by Swami Vivekananda on his return from the United States in 1897. இந்த புண்ணிய பூமியிலே சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் அவருடைய வெளிநாடு பயணம் சுற்றுப்பயணம் முடிந்து வந்து 1897 இந்த புண்ணிய மண்ணிலே கால் பதித்தார்கள். And it is this sacred land that gave to India one of its most famous sons, Dr. APJ Abdul Kalam. இந்த புண்ணிய பூமி இந்தியாவுடைய மகத்தான மகன் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களை நமக்கு தந்திருக்கிறது. In his action and thoughts, Dr. Kalam always reflected the simplicity, depth and calmness of Rameshwaram. இந்த ராமேஸ்வரம் மண்ணிலே பிறந்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் மிகவும் அமைதியான ஆழமான சிந்தனையாளராக இருந்திருக்கிறார்கள். डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि के दिन रामेश्वरम आना मेरे लिए एक बहुत ही भावुक पल है. पिछले वर्ष हमने यहां एक संकल्प किया था, आपसे वादा किया था कि कलाम साहब की याद में रामेश्वरम में एक मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा. मुझे खुशी है कि आज यह संकल्प पूरा हो रहा है. டாக்டர் கலாம் அவர்களுடைய புண்ணிய திதியிலே அவருடைய நினைவு நாளிலே நான் இங்கு வருவதை ஒரு பெருமிதமாக கருதுகிறேன். அன்றைய தினம் அவர் மறைந்த பொழுது ஒரு வாக்குறுதி தந்திருந்தேன். அவருடைய நினைவினை கூறுவதற்கின்ற விதத்திலே இங்கு ஒரு பெரிய நினைவாலயமானது அமைக்கப்படும் என்று. மிக விரைவிலேயே அந்த அவருக்கான நினைவாலயம் இங்கே அமைந்திருக்கிறது என்பதை பெருமிதத்தோடு கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने बहुत ही कम समय में ये मेमोरियल तैयार किया है. ये मेमोरियल देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा. டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு இயக்கமானது மிக குறுகிய காலத்திலே இந்த நினைவு சின்னத்தை அவர்கள் தயாரித்திருக்கிறார்கள். இது வருகின்ற தலைமுறைக்கும் எழுச்சி தரக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது. गत वर्ष मैंने
श्रीमान वेंकैया नायडू जी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी और जिनको मैंने काम दिया था कि डीआरडीओ के साथ, तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इसी भूमि पर देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले, ऐसा स्मारक बनाना है। आज मैंने स्मारक देखा, मन इतना प्रसन्न हो गया कि हमारे देश में भी इतने कम समय में और इतना इनोवेटिव इमेजिनेशन वाला एक भव्य स्मारक जो श्रीमान डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को पूरी तरह सुसंगत है, उनके विचारों को, कार्य को, जीवन को, आदर्श को, संकल्प को, ऐसा स्मारक बनाने के लिए वेंकैया जी और उनकी पूरी टीम को, तमिलनाडु सरकार को, भारत सरकार के सभी विभागों को, डीआरडीओ को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।